आज्ञा मैडम। अच्छा ठीक अच्छे ना। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन शुणु खाली गोटे मिनिट रे कहि दूची। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इट वाज फॉर्म at the year of April 1990 at the end of post-world to maintain peace and harmony in the world, right? And the having some international labor organization, having some objectives and having some principles fixed by international labor organization. A structure of ILO, the structure ILO itself a tripartite body. No, tripartite means what? The involvement of the employer, worker, as well as the government is there. And the type, though basing on these, ILO having three most important wings: conference, governing body, and international labor office. International labor conference, the basically it is a ratio of 2:1:1. 180 more than 186 countries participated in the basically it is there in the ILO. That's why the basically we can say each country they will represent four members. Four members means two behalf of the government. Specifically, we can say that in case of India, two behalf of the government cabinet ministers and one behalf of the employers association and one behalf of the Union Association. So four member behalf of India will represent every year. That decide every year. Sub prati varsha represent karibe. Likewise, every country four member around 100 more than 186 countries are there. So each country will represent four members. The ratio is like this. ଦୁଇ ଜଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁ ଜଣେ ଏମ୍ପ୍ଲୟର ଆସୋସିଏସନ ଜଣେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଆସୋସିଏସନ ଜଣେ ୱାର୍କର ଆସୋସିଏସନ ହେଲା ପ୍ରତିବର୍ଷ କୋଉଠି ହବ ସେଟା ଡିସାଇଡ କରିବ କିଏ ନା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ତାକୁ ଡିସାଇଡ କରିବ ILO ଡିସାଇଡ କରିବ ଆର କାମ କଣ ଲେବର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସର୍ଟ ଆଉଟ କରିବେ apart from this ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି ମେମ୍ବର କୁ they will select the governing body member and total number of governing body member it is 56 ଏଇ ଭିତରୁ ହିଁ ସିଲେକ୍ସନ ହେବେ କୋ ଭିତରୁ କହିଲେ जो माने कॉन्फ्रेंस रे थिबे सेई मानको भितरो ही गवर्निंग बॉडी सिलेक्शन हेबे सेई मानको भितरो ही इंटरनेशनल लेबर ऑफिस रे लोक सिलेक्शन हेबे से मानको भितरो ही आउ कोड बाहर आसीबेनी राइट एंड गवर्निंग बॉडी मेंबर टोटल मेंबर इज 56 से मानकर टोटल गवर्निंग बॉडी मेंबर हेले 56 एंड रेशियो इज 2:1:1 28 behalf of the government 14 behalf of the employer association and 14 behalf of the worker association से 14 जन को सही जो कॉन्फ्रेंस रे थिबे 14 जन को वर्कर एसोसिएशन में सिलेक्शन हेबे 14 जन सिलेक्शन हेबे एम्प्लॉयर एसोसिएशन आ 28 जन सिलेक्शन हेबे गवर्नमेंट हैला एमती 56 जन रहिबे कोथरे गवर्निंग बॉडी एंड अपार्ट फ्रॉम दिस गोटे चेयरमैन भी माने सिलेक्शन करिवे इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस बेसिकली दे विल every year no the conference is on once the governing body member selected by ILC the governing body will continue up to 3 years 3 वर्ष पर्यंत से माने कंटिन्यू करिवे तांका टेन्योर हैला 3 वर्ष apart from this ILC कोन करिवो ना ILC fix the basically what the contribution how much contribution should be there in the member country केते कंट्रीब्यूशन मेंबर कंट्री डिपॉजिट करिवे आईएलओ को प्रति वर्ष इंडिया सब जेते वर्ल्ड रे जेते कंट्री पार्टिसिपेट करचंती समस्त किछि गोटे अमाउंट जोटा कि आईएलसी फिक्स करिवो हाउ मच अमाउंट द मेंबर कंट्री विल डिपॉजिट टुवर्ड्स द आईएलओ को केते मेंबर कंट्री डिपॉजिट करिवे से माने सेटा को फिक्स करिवे हैला अपार्ट फ्रॉम दिस समान को काम हैला कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशन द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग एटा मन रखिबा आपण कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशन कोन हमें कहले कि आईएलओ इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड को मेंटेन करछि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करछि प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिफॉर्मिटी थ्रू आईएलओ हाउ बेसिकली एठी कोन करा जाय कि समाने दे बेसिकली एडॉप्टेड कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशन कन्वेंशन फॉर एग्जांपल मु कहूछि कन्वेंशन कोन फॉर एग्जांपल कि हमें कहले कि नो वी विल रिमूव द चाइल्ड लेबर अबोलिशन चाइल्ड लेबर को अबोलिश कर दबा चाइल्ड लेबर आउ रहिबेनी चाइल्ड हु इज चाइल्ड ना a person who is not completed for 14 years of age हला तो कमे चाइल्ड कोचे से माने कोठी काम करि परिबो से माने कोन करिवे ना से माने ओनली पाठ पढिबे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन से माने को दिया जिवे इंटरनेशनली गोटे रूल पास करा गला राइट तो सेटा कोन करिवे ना प्रति कंट्री सेटा को एक्सेप्ट करिवे धर इंडिया ताको एक्सेप्ट कला से कन्वेंशन के इंडिया कोन करिवो
Now, while the convention accepted by India, India आनिकी से convention को parliament रे first रे pass करिबो. Parliament रे pass होई साला परे राष्ट्रपतिଙ୍କର final signature होई Supreme Court रो acceptance होई तापरे within 1 month हां तापरे हमको कोन करा जिवो ना ताको कोन करिवे सेटा को हमरो law means the Indian constitution will implement towards the betterment of the people staying in India. ताको सेटा implement करा जिवो एमिति प्रति कंट्री implement करिवे ताको ताहले कोन हला हम यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हला ऑल ओवर वर्ल्ड रे जो रूल्स ता अमेरिका रे से रूल्स ता रहला इंडिया रे. So basing on this, the convention adopted by the International Labour Conference and recommended the rectification recommended by the each and every country. Basing on these, the ILO maintain uniformity all over the world. Say answer ILO uniformity maintain करे labor related. And India is the country who is adopted most of the convention. Most of the convention. अपन जाके list देखी परिबे Google रे प्रथा list हुआ है कितने convention India accept करी India accepted most of the convention because and जितने हमारे maximum law implement है convention रू ही implement है right. So and India basically here the India is the till 1919 to till date, since 1919 to till date India is a member of ILO. 1919 राज्य पर्यंत इंडिया आईएलओ रो गोटे मेंबर एंड इंडिया मध्ये तार गोटे बेस्ट पोजीशन सेदी मेंटेन करके रखिछ. सो दिस इज द वर्क ऑफ आईएलसी governing body maintain balance between the ILC and ILO International Labour Office, right? International Labour Office रो काम कोन International Labour Office it is there in the Geneva, Switzerland head office, right? And International Labour Office playing role as a secretariat. कौन काम करे ना हमरो देखि हमरो जो secretariat रो जहां काम administrative work, all the administrative work International Labour Office playing role as a secretariat. Secretariat रो सब administrative work काम करे सेठी सेमाने से लोक किए मैडम कोठु आसंती that also decision taken by the International Labour Conference. Who will be there work in the International Labour Office? That decision taken by the International Labour Conference. Eight member mane sabu selection huanti, right? And basing on this, International Labour Organization maintaining balance and uniformity all over the world, all over world re uniformity maintain करे. हला पिला माने बुझी गलो कि एई ना पूरा क्लियर हेले? Students, any doubt? Clear, ma'am. पूरा क्लियर ना? अन्य माने girls? Madam, Yes, please ma'am. authority के International Labour Office टा please ma'am. International Labour Office टा please authority के ma'am short हाँ. रे. International Labour Office playing role as a secretariat. तो मैम secretariat कोन आपण एग्जांपल नै जिबे आमो ओडिसा रो secretariat जो ऑफिस अछि तार काम जहा International Labour Organization रो काम सेया. Playing role as a secretariat, all the administrative work, all the administrative means decisions, all the administrative work doing by International Labour Office. धरंतु for example मैम केमिति ना देखंतु International Labour Conference हबो लोक डेलीगेट्स माने सब कंट्री रु जिबे हला कोठी हबो कोन कोन समान को दिया जिवो समान कोन कोन आसी की करिवे एते लोक को आमे को टाइप रो आमे सब ऑर्गेनाइज करिबा ए सब काम को माने करिवे International Labour Office लोक काम करिवे. Playing role as a secretariat, all the administrative work as already I told you. हला से कहार सपोर्ट रे करिवे गवर्निंग बॉडी मेंबर सपोर्ट रे करिवे. Governing body member maintaining balance between ILC and ILO, International Labour Conference and International Labour Office. Governing body member माने पूरा ILO International Labour Office को सपोर्ट करिवे ए दुई जण मिसी कि सब काम करिवे वर्ल्ड रे हला. एंड जदि आपण कहिबे International Labour Organization, International Labour Office ILO गोटे अछि हमर कोठी प्रति कंट्री रे समानकर गोटे गोटे ऑफिस अछि. जेनेवा वाला हेड ऑफिस जेनेवा जोटा कि स्विट्जरलैंड रे सेटा हेड ऑफिस एंड ईच एंड एवरी कंट्री रे गोटे गोटे हेड ऑफिस अछि. जदि हम इंडिया रे मैम इंडिया रे हम दिल्ली रे गोटे ऑफिस अछि. से कोन कोची इंडिया रे जो दिल्ली रे ऑफिस अछि
सी पूरा इंडिया रे जते सब जिंस को कोऑर्डिनेट करके रिप्रेजेंट करूची कोठी द मिनिस्ट्रीज मान को सहित कथा हबो कि कोन हैला सिलेक्शन हैला कोन कंट्रीब्यूशन कला इंडिया पैसा हाउ मच मनी कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिया what are the decision taken by the ministries whatever may be the things doing by the persons though the office it is there in the Delhi and they basically जो दिल्ली ऑफिस से माने रिप्रेजेंट करिवे कोठी की जेनेवा को सो ए अनुसार से माने कामटा कोऑर्डिनेट करन नाउ क्लियर गर्ल्स बॉयज Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके चलो आपणकर इंटरनेशनल लेबर ऑफिस सहित हमर इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट हो गला नाउ वी विल डिस्कस फैक्ट्री एक्ट हेलो Ma'am, I have one फैक्ट्री question. एक्ट सल्ला परे हमें हां बोल कोंतु Ma'am, good morning, ma'am. I have one question. That private company, if any discrepancies happen by private body, then employee can go to the labor court, sue the company. But in case of government, if government has done any discrepancies, can government employee sue the government through labor court, or the employee should go to the general court? Ma'am, see, the law adopted by the Indian Constitution and Supreme Court, it is equal for every individuals. The person, it may be working in the central government, the person may working in the state, the person may be working in the private organization. The rule is equal for every person, and basically the law is applicable for every organization. It is not only the law is not only for the private sector body and private sector they will means they can take any kind of step. No, so it is applicable for every individuals. People may be working whatever may be the place. So same rights, same law, it is applicable for every citizen of India. Okay, so Right government now, ma'am? can also sue the Madam, sue should to I the say in court? this regard? Madam, hello. Hello. Please, sir. Actually, please. I am a central government officer. So, as per my knowledge, there is a central administrative tribunal. Central administrative tribunal, is there any grievances on the part of central government employee? They can lodge their application and for seeking redressal against these grievances. And Central Administrative Tribunal for administrative issues and employees' welfare issues for any related, they are the authority to give the judgment. Similar pattern is there for state government employees also, state administrative tribunals. Thank you. Acha. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Pinaki, for highlighting this. Most welcome. Thank you. So ultimately, see, whatever may be the decision taken by the central government employees and state government employee, but as per the rules, regulation, as per the law, no, they will not take the decision as per their own. Whatever may be the things they will do as per the. Yes, no, sir. That body, the committee is there in case of the state government, the committee is there in case of the state central government, but the committee that is ultimately appointed by the government and best they will adopt every rules regulation the framed by the Indian Constitution. Yes, sir. Yes, right now, yes, sir? Absolutely. So law is applicable each and every individuals. तो चलो तो इन स्टार्ट करिबा कोन ना फैक्ट्री एक्ट 1948 सी डियर स्टूडेंट्स फैक्ट्री एक्ट 1948 having 11 chapter and 120 section. Factory Act itself 11 chapter and 120 section designed by the Indian Constitution and it was extended to the whole of India. But in your syllabus here, it is difficult to cover all the chapter and all the means what sections. It is completely impossible. So what we will discuss? We will discuss, dear students,
as per our requirements. Requirement तो सबू किछि नहले काहे 11 टा चैप्टर 120 सेक्शन हैला नो requirement तो सबू still if we will finish entire chapter and section so it will take much more time. So आम पाखरे केतेटा क्लास अछि only 10 class. So I will discuss as for your exam point of view. What the question will means you will attend in your examination and what the question will come in your examination, that chapter I will discuss here, dear students. I cannot cover all the chapter because it is quite impossible. ठीक है 11 chapter Yes, and ma'am. 120 section. Almost ଆପଣଙ୍କର ଅଧା ପଳଉଛି କଣ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଲ ବହି ଓପନ କରିବେ ଅଧା ପଳଉଛି ଖାଲି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆକ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ଆକ୍ଟ ଏତେ ବଡ ବଡ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଲ ପୁରା ନେଇକି ହେଲା ତ ଚଲନ୍ତୁ start kariba Factory Act 1948. It's the first Factory Act. It was passed in India at the year of 1881. 1881 re first Factory Act pass hala India. ठीक है? After 81 and before 1948, the Factory Act was amended various times. बहुत सारा amendment है because suppose हमें कहबा at the time of 1881 factory कहा को कुआ जाउतला जोटी 100 ରୁ more लोक काम करथिले more than 100% was working in a different factories. So due to various reasons was there, so Factory Act was amended at various times since 1881 to 1948. And at the year of 1948, the act was enacted in the year of 1948 after independence of India and extend to whole of India. Right? Press Factory Act after various amendments, right? Many amendment was there. After various amendments, Press Factory Act after independence of India, Indian Constitution adopted the Factory Act 1948 and extend to the whole of India. Whole of India means what? The Factory Act is applied, but with the rules, regulation, everything is there. The Factory Act applied for, it can be applied for the private factory, means basically controlled by the private body. It is applicable for the central government as well as the state government factories. Maybe factory control under the central government, maybe factory controlled by the state government, maybe factory controlled by the private body. So this act is applicable for every factory. That's why it extends to the whole of India. Jette factory ଅଛି India रे सबुथि ପାଇଁ ये कौन कला extend हैला. Though already I told you total number of chapter 11 and total section 120. So 120 टा section. से सब chapter कौन से सब हेले एई chapter. Chapter 1 introductory part पूरा हमें discussion करिबानी. I will discuss important things in the chapter 1. Chapter 2 inspecting staff. Chapter 3 health. Chapter 4 safety. Chapter 4 safety. Chapter 5 welfare. Chapter 6 working hours for adult workers. Jani thantu. Chapter 7 employment of young person. Chapter 8 annual leave with wages. Chapter 9 supplemental means a special provision. Chapter 9 and chapter 10 penalties and procedure. And chapter 11 of supplementals. एतिकी chapter नहीं क्या था Factory Act 1948. We will discuss some important definition right now related to introductory part in chapter 1. Chapter 2, it is a small chapter I will discuss. Chapter 3, 4, 5 is important. Health, safety, welfare. It means Factory Act means relates to the health, safety and welfare. And working hours for adult workers also. But आमे कवर करिबा हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर कारण हमरो बहुत सारा एक्ट आगु को पूरा भर्ती के अछि. So this is all about your 11th chapter related to Factory Act. पिला माने dear students, in the chapter 1
Some important definitions are there in the chapter 1. Now we will discuss some out of many important definitions. I will discuss three things related to important definition. What is manufacturing process? Who is worker? And what is factory? These three means definition related to Factory Act 1948. It is highly essential. So we should remember these three factors. First, what do you mean by manufacturing process? Karan eita ko neki hi hame agu ko jiba. Manufacturing process kon? So dear students, you can see the list here. Manufacturing process. What do you mean by manufacturing process? You can see the list here. So if possible, you can remember the list. Jodi apana mane rakhibaku chahuchanti, or else ame koi pariba. So specifically, manufacturing process means it is the raw material to finished good, variety kind of activity there in the manufacturing process. It relates to making, altering, repairing, ornamenting, finishing, packaging. You can see the entire list that designed by the Indian Constitution. Jodi gote bhi kamo se jaga re houthubo, ame taku factory boli ethi aguku kohiba. Gote bhi ethru jodi kamo houthubo. Dhara gote jaga re packaging hochi. Jodi se packaging koruchi, seta manufacturing process re jibo, and ame taku factory boli declare kariba. Agre ame seta padiba. Mone rakhibe, this is the manufacturing process list designed by the Indian Constitution. Hela, ଆଉ ଅଧିକ ଏଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁନି. Who is worker? Worker. As for the Factory Act 1948, worker kahaku kohiba? Worker means a person who is working directly or through a contractor, with or without knowledge of the principal employer, whether remuneration or not. But a manufacturing process must be carried on. Etike mane rakhin. Who is worker? Worker kiye? Worker is a person who is working. Suppose me is a worker. Worker is a person, me is a worker. A worker can work directly or through any contractor or agency. I'm working here at DDC. I can work directly. Mu directly asiki appoint kariki mu DDC re kamo korchi. Or I can also work here through any agency or through any third party, agency or contractor, third party through us. ठीक है, with or without knowledge of the principal employer. Who is the principal employer at DDC? Principal employer is the director. Director मते जानी थई पारंती, with or without knowledge, or जानी न थई भी पारंती. केमती जानी थिबे? If mo directly appointed थिबे director मते जानचंती. If I have appointed through third party director मते न जानी थई पारंती. Suppose it is third party through security guard man आछथि, third party through cleaning वाला आछथि, third party through हमरे इलेक्ट्रिशियन से सब होचंती, थर्ड पार्टी थ्रू रो बहुत सारा डाटा एंट्री ऑपरेटर होचंती. डायरेक्टर कोन से मानु चिनी चंती समस्तंको नो हम मानु को चिनी चंती काई हम पूरा डायरेक्टली रहउछु एंडर ये काम को अपॉइंटिंग अथॉरिटी से हमको सैलरी से दउचंती. हां तो सेट में से जानिबे whether remuneration or not. मु remuneration पाउ थई पारे न भी पाउ थई पारे. त माने मैम कोन से आसी फ्री रे काम करिवो नो. मु केतले कहली जमा फ्री रे काम करिवनी, केही भी फ्री रे काम करिवेनी वर्ल्ड रे. Remuneration means if I will work here, whether the principal, whether the organization, whether the factory will give, whether that particular area will give remuneration means mate prati din ro wages dei dabo. Nale kam kariba? It may the area, it may the sector will provide cash or kind. Kind mane kon idea asila? Cash ala remuneration. Kind mane kon asila? किछटा मते जिंस आकार रे दे दबो. जेमति कि सेठी पैकेजिंग होउची, कोन पैकेजिंग होउची? राइस पैकेट होउची, पैकेजिंग सब होउची. तो मते कोन कला किछटा राइस दे देला, एति कि मते देई पारि. That also can be a worker. ताकू भी मते हम वर्कर कहबा. खाली वेजेस पाउची ताकू खाली वर्कर कहजिबनी. Without wages मध्ये वर्कर कहबा, the person may be getting some kind of kind. But the manufacturing process must be there. सेठी manufacturing process होउची. Manufacturing process कोन? ए सब किछि गोटे जिंस होउथि ताहा हेले हम ताकू कहिबा वर्कर. हेला मु सब काम करूची, मोर बाडी रे मु मेंचे काम करची, मु मैम से पैकेजिंग करची, ये करची, ता माने मु वर्कर छी, सेटा अपन पर्सनल काम करछन. फैक्ट्री कोन? व्हाट डू यू मीन बाय फैक्ट्री?
As per the Factory Act 1948 section 2M मन रखिबे Factory Act को section रे define करा जाय so Factory Act section 2M रे define करा जाय as per the Factory Act 1948 section 2M define factory means any premises माने खाली बिल्डिंग को धरा जीवनी गेट टू नेकी पूरा जितने तार एरिया कवर करछि सब को हम एथरे इंक्लूड करिबा एनी प्रीमाइसेस वेयर and 10 or more persons are working जोथिरे कि 10 जन रु अधिक लोक काम करूथिबे were working on any day preceding 12 months माने 12 मास लास्ट 12 मास जो 12 मंथ थिला preceding 12 months एनी डे 10 जन काम करछन से जगह एनी डे गोटे दिन भी मोर देन 10 जन से जगह काम करछन राइट तापर 8 जन 5 जन धर काम करछन एनी डे प्रीसीडिंग 12 मंथ्स 12 जन 10 जन अधिक काम करछन एनी पार्ट व्हिच मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज देयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रो एनी पार्ट रे जोटा कि म ऑलरेडी लिस्ट कहली विथ द एड ऑफ पावर जोथिरे कि पावर यूज होतो पावर माने कोन पावर इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी माने रखिबे हैला इलेक्ट्रिकल एनर्जी रो माने कोन सपोर्ट रे 10 जन मोर देन 10% टेंडर मोर देन 10% गोटे भी दिन सेही जगह रे काम करचंती जोटा कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हेची प्रीसीडिंग 12 मंथ्स तो स्टेट गवर्नमेंट ताको कोन डिक्लेयर करिवो सेडी स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करिवो इट इज ए फैक्ट्री ताको फैक्ट्री कहि के डिक्लेयर करा जिवो वेयर इज सेटा हला गोटे काइंड रे डेफिनेशन गोटे पार्ट रो सेकंड पार्ट कोन कवर करची ना वेयर इज वेयर 20 or more person कोडिए रु अधिक लोक काम करचंदी any day preceding 12 months को भी दिन preceding 12 months रे where manufacturing process is there manufacturing process हेची without aid of power सेठी इलेक्ट्रिसिटी रो कोनोसी सपोर्ट निया जाय नाही सेटा को मध्य हमें विदाउट इलेक्ट्रिसिटी केमते परिबो सेटा को मध्य हमें फैक्ट्री डिक्लेयर करबा पिला माने गोटे एग्जांपल कहि परिबो कि हमें तो जानिते सब फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिना काम होई परिबो मशीन चलीबोनी कोन एंती जगह जिंस अछि जोटा कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी काम होई परिबो त हमें फैक्ट्री बोली डिक्लेयर करबा हमें करी गवर्नमेंट डिक्लेयर करबो एनी एग्जांपल स्टूडेंट्स कोन सब साइलेंस हे गले बा पिला माने हेलो मैम वेजिटेबल हां कोन Yes, ma'am. कोन ढाई परिबो Construction work. कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री रे जीवनी बाबा कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री रे जीवनी से तार रूल रेगुलेशन लॉ ता पे अलग आसी कंस्ट्रक्शन सब कंस्ट्रक्शन पे बोले हैंडमेड क्लोथ्स हां वेरी गुड है ना ठीक है एग्जांपल दा देले जेते सब हैंडमेड वुड रो हैंडमेड होची हैला आपणकर जेते सब माने कोन कहिले वुड रिलेटेड हो क्लॉथिंग रिलेटेड हो हैंडमेड सब करूचंती जेते सब हां जेते सब हैंडमेड वर्क आपणकर यूज करूचंती जेते प्रकार वुड हला स्टोन हला स्पेसिफिकली हमें कहबा कि क्लॉथिंग हला स्पेसिफिकली हमें कहबा कि हैंडमेड सब सेट्स रे करा जाए जेते सब हैंडमेड रो सब काम हो से सब हां जो हमर स्टोन ब्रेकिंग करा जाउची स्टोन ब्रेकिंग जो करी कि माने चिप्स वगैरह करा जाउची से सब फैक्ट्री गोटे गोटे से इलेक्ट्रिसिटी रो कोनो से काम न ए सब हेले सेकेंड डेफिनेशन रे आपनकर कवर अप बुझिले पिला माने क्लियर ना यस मैम Yes, तो ma'am. तीनटा फैक्टर को एडी मन रखिबे हैला गोटे हला व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आउ सब मुंड परिया दरकार नै सब कोन आसीबो कहले आपण 5 मार्क क्वेश्चन आसीबो ब्रीफली एक्सप्लेन डिफाइन व्हाट इज फैक्ट्री एंड हु इज वर्कर कहके हैला तो आकु टिके मन रखिबे फैक्ट्री कोन बहुत इंपोर्टेंट हु इज वर्कर बहुत इंपोर्टेंट एंड व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मोर इंपोर्टेंट ए तीनटा को एडी कवर करिवे इंपोर्टेंट डेफिनेशन रे तपर हमें चलंतु स्टार्ट करिबा कोन ना चैप्टर सुनंतु चैप्टर 3 मु स्टार्ट करिबा पूर्वरु चैप्टर 3 इट इंक्लूडिंग हेल्थ
करबा पूर्वरु मु खाली चैप्टर 2 रो किछिटा कहि दोछि हैला चैप्टर 2 रे किछि नाही chapter 2 chapter 1 important definition already I told you chapter 2 it is the inspecting staff dear students chapter 2 inspecting staff three most एटी नाही सेट में मु कहि दोछि chapter 2 three most important factor is there inspecting staff under रे कोन कवर होछि ना inspecting staff under रे कवर हैला first is the inspector appointment of inspector second is the power of the inspector third हैला certifying surgeon ए तीनटा मन रखिबे section 8 section 9 section 10 section 8 कोन कवर करछि chapter 2 inspecting staff हैला तर heading under रे कोन रहिला ना inspector appointment of inspector additional inspector chief inspector who will appoint the inspector it covers section 8 who will appoint inspector additional inspector and chief inspector appointed by state government will appoint and chief inspector तो appoint करिबो मैम अपन को वॉइस ब्रेक होची वॉइस ब्रेक हला पिला माने वॉइस ब्रेक लगी रे हेलो हाँ हाँ, मैम मैम। मझीटा बिल्कुल Yes, किसी मैम। शुणी पारलुनी Yes, ma'am. अच्छा 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 एना पिला माने बट टिके आउट अपॉइंटमेंट ऑफ जो Out. इंस्पेक्टर स्टेट को अच्छा हाँ चैप्टर 2 तार हेडिंग देबे कोन इंस्पेक्टिंग स्टाफ देखो एठी आपन को देखिथिले मु गोटे सेकंड एई देखो चैप्टर 2 रे हेडिंग कोन थिला चैप्टर 2 इंस्पेक्टिंग स्टाफ तार हैला हेडिंग चैप्टर 1 हैला इंट्रोडक्शन रे तीनटा जिंस मन रखिले मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वर्कर एंड फैक्ट्री आ बाकी सब किछि मुंडो पुरेबा दरकार नै चैप्टर 2 इंस्पेक्टिंग स्टाफ हैला हेडिंग आपन को ता अंडर रे तीनटा जिंस कवर करिवे कोन appointment of inspector additional inspector chief inspector section 8 appointment of inspector additional inspector chief inspector section 8 power of the inspector section 9 certifying surgeon section 10 certifying surgeon section 10 एना सुभा गला पिला माने क्लियरली यस मैम हाँ तो appointment of inspector additional inspector chief inspector appointed by who will appointed by respective state government जो स्टेट रो सही गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश स्टेट तारो अपॉइंट करी बस ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट से अपॉइंट करी so respective state government will appoint the inspector additional inspector chief inspector as per the local limit as it think fit local limit अनुसार से लोकालिटी रे लिमिट केते सही अनुसार आसीबे माने अपॉइंट हेबे इने बेसिकली केमिति अपॉइंट हेबे ना प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एमानकर थिबो सबु किछि थिबो ऑफिशियल गेजेट रे स्टेट गवर्नमेंट एमान को अपॉइंट करिवे also we can call every district magistrate can be an inspector right appointed by the state government district sorry. मैडम सॉरी मैडम अपन को वॉइस पूरी ब्रेक हैला प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन टू मैडम प्लीज कौन जी ब्रेक लग रे पिला माने अच्छा यस मैम ब्रेक होची मझी मझे ब्रेक हो ओके मैम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को तो देखो सुनंत एटी कौन को गला इंस्पेक्टर एना सुभा गला पिला माने हाँ मैम यस मैम हाँ इंस्पेक्टर additional inspector chief inspector appointed by the respective state government in a prescribed qualification proper qualification in the official gazette सेमानकर क्वालिफिकेशन अनुसार ऑफिशियल गेजेट रे सेमाननको नोटिस दिया है कि अपॉइंट करा जिवो हैला एवरी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट
प्रति डिस्ट्रिक्ट रो जो मजिस्ट्रेट अछंती they can also be a one inspector in that particular district हैला ये तो अपॉइंट करिवे प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन ऑफिशियल गेजेट नहीं की करा हबो ता छडा जदि प्रति डिस्ट्रिक्ट रो जो मजिस्ट्रेट अछंती सेमाने मध्य गोटे गोटे रोल प्ले करि परिबे एज ए इंस्पेक्टर बुझी गले एना सुभा गेला कि पिला माने यस ना मैम यस ये तापरे आसंतु पावर ऑफ द इंस्पेक्टर चीफ इंस्पेक्टर एडिशनल इंस्पेक्टर पावर तो निहाती पिला माने बहुत बड़ ही हबो हैला फैक्ट्री को कंट्रोल करिवे माने पावर ऑफ द इंस्पेक्टर गोटे लंबा चौड़ा 2 पेज रो लिस्ट देछि सेते मुंड पुरेबा हमर दरकार पावर ऑफ द इंस्पेक्टर कोन इंस्पेक्टर can visit any reasonable day in a reasonable time with his or her assistant the assistant सहित reasonable day रे reason ताबने संडे रे राती 12 रे जाके आपण ठक ठक करिवे नि फैक्ट्री को मु इंस्पेक्शन करबा को आसी ना संडे तो छुट्टी एंड आपनकर वर्किंग आवर गोटे फिक्स करा जाईची upon in a reasonable day, in a reasonable time, with the assistant, the inspector can visit any factory at any moment of time in a reasonable day and time. The power of the inspector can inspect overall entire factory with the individuals. Individual लोगों से interaction करी परिबो. Overall inspection of the overall documentation. Identify the every situations, suppose situation, documentation, interaction, everything can do by the inspector. And as per the requirement, the inspector also can appropriate step towards the factory. Appropriate step kona? Suppose you are doing some kind of unethical, illegal practice. It is the power of the inspector. The inspector can cancel your license. And also the inspector can take this step neki तुमको fine सहित imprisonment मध्य हेई परिबो. So this is the power of the inspector towards the factory. बुझी गले आरो लंबा चौड़ा लिस्ट देछि एतिकी मने रखिबे हैला सर्टिफाइंग सर्जन किए who is the certifying surgeon पिला माने I hope clearly मो भॉइस सुबा जाउतु बइना क्लियर Yes, ma'am. पिला माने हां मैम अभी भी like सर्टिफाइंग होचा सर्जन किए और एबे भी क्रैक करछि वॉइस नहीं एबे ठीक हैला मझे ठीक मझे है ब्रेक surgeon is the person appointed by the state government and the person is a qualified medical practitioner like a doctor. Certifying surgeon kiye appointed by the state government with reasonable qualification in an official gazette, and the person is a qualified medical practitioner से जे की प्लेइंग रोल एज ए डॉक्टर कौन रोल प्ले करिबो डॉक्टर रोल प्ले करूची प्रति फैक्ट्री रे से गोटे सर्जन गोटे डॉक्टर तर चांबर अपॉइंट करा जाइछबो तर काम कोन पिला माने ता काम होला द सर्टिफाइड सर्जन डॉक्टर एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी jewels it is मैम थोड़ी ब्रेक हैला वॉइस हां मैम पूरी सॉरी break हैला भाई। किछि सुनि पालुनी किछि सुनि पालेन अच्छा ए रूम को बोधे नेटवर्क आसुनी कि कोन बुझिले ना मजी आगुरु नउथिले एडी पूरा नेटवर्क आसुला पिला माने मैम काली ठीक थिला अजी काली ठीक थिला काली मु एक्चुअली घरे नउथिली क्लास एडी हमर नेटवर्क ता पूरा भलो रहे सुबह होनिबा नेटवर्क ता सेठी भलो रहे हमर एटा मु आज डीसी नउछि ए रूम रो नउछि ता ठीक अछि ना आइना पिला माने
आगे आगे बट खाली टिके सेपटू प्लीज सेपटू आउथरे भल सुबा जाउछि सर्टिफाइंग सर्जन टा पूरा फास्ट रू कहबे हमें किछि सुनी पारलुन सुनी पालेनी अच्छा कोइ certifying surgeon is a person appointed by the state government with a reasonable qualification सुबा जाउछि पिला माने एना क्लियरली सुबा गेला आगे आगे ठीक हाँ अछि certifying surgeon is a person appointed by the state government in a reasonable qualification सहित the state government will appoint notification in a official gazette रे notify करिकी ताको appoint करा जिवो who is a certifying surgeon certifying surgeon is a qualified medical practitioner means he or she must be a doctor qualified medical practitioner हेजिबो जे कि डॉक्टर रो रोल डॉक्टर हेजिबे ताको अपॉइंट करिवो मैम ताको काई अपॉइंट करिवो सेक्शन 10 रे बिकॉज़ इन ए फैक्ट्री any kind of illness any kind of injury any kind of emergency no it is a responsibility of the doctor will treat quickly the particular individual person say the person को से quickly treatment करिवो any kind of injury illness and any kind of things will happen emergency situation रे ता छोड़ा ता काम कोन ना the certifying surgeon will give issue the token गोटे token issue करिवो कहा को ना to the young person madam young person किए young person हैला जे कि 18 वर्ष कंप्लीट करि नथिबो either adolescent or child से adolescent रे बिजिबो child पिला माने एडी खाली child टाको मन रखि देथिबो who is child means एडी खाली कहि दोछि ठीके child means a person who has not completed his 15 years of age बुझी गले child किए एडी child 15 वर्ष पर्यंत कैलकुलेट करा जाउछि पिला माने किंतु जदि हमें चाइल्ड लेबर रेगुलेशन एबोलिशन एक्ट को जिबा सेडी चाइल्ड 14 वर्ष को आ जाउछि सेथिरे बट फैक्ट्री एक्ट रे चाइल्ड को 15 वर्ष को आ जाउछि जुवेनाइल रे चाइल्ड को 18 वर्ष को आ जाउछि तो सबुटे डिफरेंट चाइल्ड को डिफाइन करा जाइछि बट दो इट इज अ फैक्ट्री एक्ट 1948 you should remember child means a person who has not completed his 15 years of age ता माने 15 वर्ष जो माने चाइल्ड से माने फैक्ट्री काम करि परिबे नाही स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड as per the child labor regulation abolition act adolescent जो माने किए जो माने 15 रो 18 भितरे थिबे से मानको adolescent को आ जाउची ताले young person किए young person हला either child or adolescent ता माने child तो काम करि परिबे फैक्ट्री कोनोसी जगह रे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करा जाइची ता माने जो young person माने किए आसले adolescent माने आसले 15 to 18 भितरे धरो 15 to 18 भितरे जदी किए काम करूचंदी फैक्ट्री रे whether the person is suitable to work in that particular area or not that token certifying token will issued by ताको से इश्यू किए करिवो एई सर्टिफाइंग ऑफिसर इश्यू करिवे सर्टिफाइंग सर्जन देखो तारो वेट हाइट तारो फिजिकल फिटनेस ए सब थिले तो से काम करिवो ना फैक्ट्री रे 18 वर्ष हेई नथिबो 17 वर्ष हेइथिबो यंग पर्सन ताको कुआ जिवो हैला तो फिजिकल फिटनेस तो नथिबो ताले से केमति काम करिवो तो लोकटा तो मर जिवो ना तो the certifying surgeon will issue a token तार एई सब certifying surgeon रा काम मने रखिबो certifying surgeon will issue token to this to a particular person basing on this the person can work in the factory पिला माने I hope कि clearly सुभा गला और clearly बुझा गला yes ma'am yes सुभा ma'am भी गला बुझा भी गला yes ma'am yes yes ma'am ma'am clear हां हां हैला एतिकी मन रखिबे certifying surgeon अनुसार चाइल्ड पिला माने लेस देन 15 इयर्स को चाइल्ड कहबा यंग पर्सन हला 15 टू यंग पर्सन चाइल्ड भी और एडल्ट भी आसीबे किंतु एडी चाइल्ड हला स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड सेति पा हमें एडी यंग पर्सन को कहा को नेले एडल्ट को नेले और एडल्ट हला मोर देन 18 इयर्स से माने सब जगह रे फिट से माने काम करि परिबे फैक्ट्री चाइल्ड स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हला तो चलंतु हम स्टार्ट करबा हेल्थ हला चैप्टर 3 हेल्थ फैसिलिटी chapter 3 health facility it cover section 11 to section 20 health facility केते रु केते कवर होची पिला माने section 11 to section 20 हला health facility किछि एथिरे नाही मु चटापट कहि देबी ध्यान रे सुनी देबे हमर 8 9 and 10 दीपक एटा नेक सेठी बसुनो आ बसुनो
आराम रे बस हैला सेक्शन 8 9 10 कौन गला सेक्शन 8 9 10 हैला इंस्पेक्टिंग स्टाफ सरी गला तो सेक्शन 11 टू हमर स्टार्ट हैला कौन चैप्टर 3 चैप्टर 2 8 9 10 रे सरीला आउ थरे कहूची चैप्टर 3 स्टार्ट हैला सेक्शन 11 टू सेक्शन 11 टू सेक्शन 20 इट कवर हेल्थ फैसिलिटी प्रोविजन रिगार्डिंग हेल्थ फैसिलिटी हैला कौन अछि इथिरे 11 to 20 section 11 cleanliness फटाफट कहूची ध्यान रे सुनिबे section 11 cleanliness means what every factory should clean every day through sweeping and mopping झाड़ू पोछा मारी की प्रतिदिन फैक्ट्री को क्लीन करा जिवो it must be the room corridor staircase open floor every area the factory have to maintain clean and hygienic maintain kara jibo through sweeping and mopping sabu jaga corridor staircases open place rooms every area right it must be maintained clean and hygienic every day through sweeping and mopping that is the meaning of cleanliness आमे आगु सब जानि छे खाली गुटे ऑर्नामेंटली लिखिबा कथा सब आगु आमे जानि छी पिला माने क्लियरली सुबा देउची जोडी न सुबा जिबे कहिबो मते मैम सुबा गलानी बोली हैला आज का डेट रे क्लीनलीनेस पाई बहुत टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करा जायछि जेमति कि आमे एठी देखि पारुछि आगुरु कोन करथिले आमे झाड़ू हाथ रे झाड़ू करथिले एते बड़ बड़ फैक्ट्री कोन हाथ रे झाड़ू करबा पॉसिबल नाही तो सेठी पाई कोन करा जाउछि देखो केते भलो भलो मशीन आसी गलानी राइट ए सब थ्रू दिस मशीन वी कैन क्लीन वेरी क्विकली एंड इजी प्रोसेस इजीली एंड क्विकली the entire factory can maintain clean and hygiene झाड़ू मारिबा पोछा मारिबा हाथ रे एडे बड़ फैक्ट्री को इम्पॉसिबल सेटा आगर सिस्टम थिला बट नाउ ए सब किछि आ दरकार नै तापय बड़ा बड़ा मशीन आसी गला आफ्टर क्लीनलीनेस डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड इन्फ्लुएंस देखंतु गवर्नमेंट कोन कहिछि आपण माने तीनटा तीनटा जिंस रखिबे गोटे ब्लू गोटे रेड गोटे ग्रीन जोथिरे कि आपण वेट थिंग्स गोटे रे रखिबे ड्राई थिंग्स गोटे रे रखिबे हाँ प्लास्टिक सब मेडिकल भी जिबे ना गोटे रे वेट थिबो गोटे रे ड्राई थिबो समान लेखा हिथिबो कोटा को जिंस रे पकेबे आपनकर पूरा सब रोड रे गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दिछि से सब तो आमे इठी कोन करबा आफ्टर क्लीनलीनेस डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड इन्फ्लुएंस जोटा अननेसेसरी थिंग्स वी शुड डिस्पोज इन ए पर्टिकुलर एरिया रे हम तक डंप करबा ना कि एपटे सब तक फपाड़ीबा हमर जिंस सब फैक्ट्री बाहर कर देले रोड रे नेगी फपाड़ देले ता पर दिन स्टेट गवर्नमेंट आसीबो ताको ताला पकई देथिबो फैक्ट्री की हैला तो कोन करिवे ना डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड इन्फ्लुएंस दोस आर अननेसेसरी थिंग्स दोस आर अनयूजुअल थिंग्स यू हैव टू डिस्पोज इन ए पर्टिकुलर प्लेस देन वेंटिलेशन एंड टेंपरेचर कोन कहूची ना एवरी फैक्ट्री दे हैव टू प्रोवाइड proper ventilation facility inside the factory to maintain the general temperature धरंतो खरा दिन रे हमर धरंतो एसी कूलिंग रो फैसिलिटी नाही त माने हम कोन करबा वेंटिलेशन दबा जोटा कि हमर सफिशिएंट डोर विंडो सब थिबो so that kind of fresh air it can the fresh air it can enter inside the factory so that the worker they can work freely right so ventilation temperature हमें proper maintain करिबा so temperature maintain करिबा पई if it required then we have to provide cooling facility inside the factory in case of the hot summer रे जोडा एने चाली ची heat wave more than 45 degree होबा को गलानी नो heat wave रे हमें कोन करिबा ना cooling facility दबा temperature maintain करिबा पई so this is of the ventilation and temperature dust and fumes dust हला धूली फ्यूम्स हला कन धुआं डस्ट एंड फ्यूम को हमें मेंटेन करबा केमती करबा ना प्रॉपर वेंटिलेशन फैसिलिटी शुड बी देयर plenty of doors and windows so that it may be the dust or it may be the fumes it can remove easily देखंतु डस्ट आ धुआं आ धूली हमें झाड़ू कला जो चारियाडू बंद हेकि थिबो से जीवो कुआडे हमें सेटा को प्रॉपर वेंटिलेशन हमें देइथिबा विंडो एंड डोर स्काईलाइट्स ताले सेटा इजीली रिमूव होई परिबा so dust and fumes it can be removed easily section 14 artificial humidification पिला माने एई ना जो hot wave हमर चलची heat wave and hot summer तो इथिरे हमर कोन होची it is a natural humidification humidity এটা natural but जो माने those persons are working in front of the fire
right in front of the hot machinery सेटा कोन हबो ना सेटा ठंडा दिन रे भी विंटर रे मध्य सेटी कोन हबो अपन को गरम सब बेले रहउतबो से एरियाटा टेम्परेचर इज मोर देन द नॉर्मल टेम्परेचर सेट रहउतबो ताले कोन हबो अपन ना आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन सेटा को कहा जाय दैट इज नॉट नेचुरल एटा तो हमर नेचुरल सेटा आर्टिफिशियल so in case of artificial humidification the factory should provide proper cooling facility as well as the adequate ventilation सहित cooling facility provide करिवो every room को so that the room can maintain cool and the room can maintain proper means what healthy system must be there in that particular area that is the artificial humidification overcrowding crowd माने कौन पिला माने crowd माने हेला भीड़ धस्ता धस्ती देखो एटी गोटे मु देखौची तुमको पिक्चर कोन ना एटा देखो एटा हला ए सिस्टम रे आगुरु काम करथिले लोक माने एमिति काम करथिले आगुरु बिफोर 1948 फैक्ट्री एक्ट जेतले ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह सब थिला हला लोक माने काम करथिले एइति सब सिचुएशन एइटा को फैक्ट्री को जाउथिला हला आको एई सिचुएशन रे एइ सर आसीबा लेट हो हां मते कहि मु केम जानिबी मते कॉल करिवो कॉल कले हां कॉल कले मु छाडी ओके फाइन सेति पर्यंत मोर भलो हला मोर भी दरकार हां हला पिला माने सुबह जाउची ना देखा जाउची ना यस मैम हाँ हाँ जोड़ी न सुबह को कहबे रे पिला माने सेटा पर हैला सो एई सिचुएशन रे लोक माने काम करथले तले हमर ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह थिला हैला तो एई सिचुएशन रे काम करिबा इट इज क्वाइट डिफिकल्ट आको कोन कह जाउची आको कह जाउची क्राउड हैला ओवर क्राउड ताको कह जाउची ओवर क्राउडिंग तो ओवर क्राउडिंग को हमें कंट्रोल केमति करिबा ना ओवर क्राउडिंग को हमें कंट्रोल करिबा केमिति फैक्ट्री एक्ट 1948 कहला now we can control the overcrowding the one person gotiye lokotu each worker should be provided within a minimum space each worker tamo mo bhitare minimum space rahiba darkar how much space the space is must be 14.2 cubic meter pila mane mane rakhibo eta ko फैक्ट्री एक्ट कौन कहला each workman should be provided within a minimum space one person to other person the space must be 14.2 cubic meter केति की स्पेस आउची सेटा तमे एनालिसिस करिवो हैला एटा अमेंडमेंट हे केछि आगुरु 9.9 cubic meter थिला अमेंडमेंट परे एटा को 14.2 cubic meter करा जाई पिला मान तो 14.2 cubic meter रे जदी गैप हैला ताहाले सेठी हमें क्राउड को कंट्रोल करि परिबा ओवर क्राउडिंग इट कैन बी कंट्रोल एंड द पर्सन कैन वर्क वेरी कंफर्टेबली दैट इज द सेक्शन 16 says section 17 lighting see every factory have to provide plenty of artificial light power electricity artificial light as well as the plenty of things should be there in the factory so the natural light also it can be enter inside the factory it means what the factory have to design in such a manner though plenty of windows skylights should be there window skylights thibo and the windows and skylight it must be clean मेंटेन करथिबे एमिति असना है कि थिबो टोटली लाइट ही आसी पान नथिबो सेमति नो इट मस्ट बी मेंटेन क्लीन एंड जो एरिया रे सपोज इन इंटीरियर एरिया the natural light it may not be possible so what will we do now plenty of artificial lights should be there in the interior place so that any kind of accident any kind of incident we can avoid. So this is the lighting facility each and every area आम घरे जेमिति फैक्ट्री सेमिति फैक्ट्री को आम घरे बोली भाबो से अनुसार आमे मेंटेन करूचे हैला तापर आसला के ड्रिंकिंग वाटर सेक्शन 18 ड्रिंकिंग वाटर कोन
See, dear students, every factory, they should provide plenty of drinking water facility, plenty of each every area re semanakara drinking water facility rakhithibe hela, and it must be mentioned in a local language रे मेंशन करथिबे अपन से इंग्लिश रे लिखिथिबे से माने तो बुझी परिबेनी हिंदी रे लिखिबे ओडिसा वाला तो बुझी परिबेनी हला से कोन लिखिबे ना जदि से माने एते लिटरेसी थांता ताल तो से माने ऑफिसर होई थांते तो सेडी आपण लिखिथिबे ड्रिंकिंग वाटर इन अ लोकल लैंग्वेज and plenty of drinking water facility you should provide inside the factory. But if more than 250 workers are working, ए जो calculation ए जो या को मन रखिबे केते रे केते दिया जीवो हला, more than 250 workers are working over a factory, then you should provide cooling drinking water facility. Cooling drinking water facility माने कोन ठंडा पानीय जलर बंदोबस्त करथिबे हला, and the drinking water area जोटी तो अपन drinking water रखिथिबे around nearest is specifically we can say 6 meter bhitare there should not be any urinal, latrine and open drain system should not be there. Urinal nathibo, latrine nathibo, open drain nathibo, and that area it must be maintained clean and hygiene. Clean and hygiene se area maintain houthibo hela, सेटा हला कोन ना हमर हला ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी टू असी फैक्ट्री. Latrines and urinals, latrine and urinals कोन see, dear students, every factory have to provide latrine and urinal facility for separate for the male and female workers. Female worker male worker ପାଇଁ separate thibo, and it must be mentioned the male and female आज आगु तो word रे mention होतला आज काली picture रे mention करा जाउची ना male or female कहि. So it must be maintained it is a male and female worker, male and female mention करा जाउथबो. अच्छा, if more than 50 workers are working over a factory, जदि 250 रु अधिक लोक फैक्ट्री काम करूचंती, it must be the factory must be provide कोन latrine urinal दिया जिवो ना, the factory have to provide sanitary type latrine and urinals. Sanitary based latrine and urinals. Sanitary based माने कोन ना time to time different detergent रे सेटा clean होतबो. Different detergent like जेमति कि हमें कहबा कि लाइन, जेमति हमें कहबा कि फिनाइल, जेमति हमें कहबा कि variety kind of सेटा को clean करा जाउथबो, right? जदि 250 रु अधिक लोक फैक्ट्री काम करूचंती, and it must be separate for male and female worker, and it must be maintained clean and hygiene. That is a latrine and urinal. Section 19. Section 20, spitons. Spitons माने कोन रे पिला माने स्पीट करिबा, थुकिबा हैला. So हमें कोन करिबा देखो, फैक्ट्री कोन करचंती लोक माने workers, most of the workers कोन chewing गुटखा पान वगैरह नो सेटा तांकर हैबिट. तो से माने कोन करंती कि से जेते बेले से माने काम करंती स्पेसिफिकली कॉरिडोर, open areas, staircases रे काम करंती, so थुकी का पळेबे, so factory completely unhygiene and unhealthy situation को चली जाए. So सेति Factory Act 1940 कहला to maintain clean and hygiene nobody can spit inside the factory. Inside factory केही भी spit करि परिबे नाही. So the particular place must be there where the worker they can spit in that particular area only. सेमानक पई जो आज का डेट रे देखिबो कोन बाली रखी कि गोटे इंदी एरिया थिबो ना, सेडी लेखा हिथिबो you can spit here. पार्क मानक रे भी देखिबो सब लेखा हिथिबो एठी तमे थुकी परिबो, एठी तमे तमरो unused things डंप करि परिबो ना, सब एरिया रे लेखा जाइथिबो. तो आपण माने एठी स्पीट करि परिबेनी. तो जदी मैम कला मने पड़लानी कर देला, सेठी पई फैक्ट्री स्टेट गवर्नमेंट कोन कहला कि if in such a condition, if जदी गोटे लोक a person can spit inside the factory, so what will happen? तो नमस्ते, so what will happen? The person will give fine. तो person को कोन करा जिवो, फाइन चार्ज करा जिवो. तो लोकटा कोन करिवो, फाइन दब केते 5 rupees, 5 टंका फाइन दिया जिवो. 5 टंका थिला सेटा चेंज हेनी समथिंग अछि. So this is all about your students, your health facility, section 11 to section 20. Got it? पिला माने clear? बुझी गलो? Or any doubt?
मैडम हाँ। टिके आउथरे आर्टिफिशियल ह्यूमिडेशन आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन देख पिला माने जदि आमे कहबा एइना हॉट समर रे ह्यूमिडिटी हमको प्रबल होची बहुत ह्यूमिडिटी अछि एटा को आमे कोन कहबा ना इट इज प्योरली नेचुरल दैट इज अ नेचुरल ह्यूमिडिटी इट इज नॉट आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी हॉट समर रे ह्यूमिडिटी ता नेचुरल इट इज द नेचर रेट अछि हम एटा को कोन आमे बनै छै इज इट मैन मेड नो it is there in the nature that's why it is a natural humidification those persons are working in front of the fire in front of the hot machinery right hot machinery front re fire front re jo mane kaam karanti generally if the normal temperature is 20 in that particular area the temperature it must be double temperature सेठी थाए so samane kon karanti na samane sethi generally artificial humidity samane feel karanti and that humidity is a completely artificial humidity तेनो artificial humidity को आज तो सेठी kon करा जिवो सेठी kon करा जिवो ना here the factory have to provide plenty of ventilation and cooling facility to that worker so that worker can feel fresh and worker can work comfortably जो माने स्पेसिफिकली से एरिया रे काम करन ताको आर्टिफिशियल देखो शीत दिन नॉर्मल टेम्परेचर रे थिबो ना आमे जतले किचन को जाउचे काम करचे से देखिबो नॉर्मल रूम टेम्परेचर और किचन टेम्परेचर डेफिनेटली बहुत डिफरेंस थाए तो आमे सेठी कोन टिके अधिक एना तो किचन टेम्परेचर आउरी अधिक जदि 45 थिबो नॉर्मल टेम्परेचर किचन टेम्परेचर से 50 से जेथिबो 5 डिग्री अधिक थिबो काहे ना सेठी जनरली हमर जो इन फ्रंट आमे कोउठी रोचे इन फ्रंट ऑफ द गैस इन फ्रंट ऑफ द स्टोव तो वैरायटी काइंड रा में रोचे तो सेठी पण टेम्परेचर अधिक थाए तो सेठी हम सेही जो येटा को आमे कहबा आर्टिफिशियल सेठी आमे कूलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करबा ठीक ना क्लियर ना जियो यस मैम थैंक यू मैम ओके आउ कहार किछि डाउट पिला माने हेल्थ फैसिलिटी 11 to 20 I hope it must be clear to you Yes, ma'am. Clear. clear ना कोन मन Yes, दुख रे ma'am. क्लियर कइलो No, ma'am. It's clear. हेलो पिला माने अच्छे तो मैडम टिके स्लाइड गुड़ाक बैक करी करी जिबे कि टिके कोड बैक करबी स्टार्टिंग रो सेक्शन 1 और 2 जोट लिखा है सेक्शन 1 2 लिखा है तो एटा ना ना मैडम एटा नहीं एटा नो एटा या परे मैडम या परे शेष होबाक थिबो एटा 2 3 आउ परे एटा 11 आ पर नहीं आ पर म पढेनी Ma'am, safety and welfare page, can you please show? Safety and welfare गोटे पेज थिला आ बिफोर मैडम सेटा टिके काली लिखाई काली काली जते स्टार्ट करबी एटा स्टार्ट करबी हला ओके स्टार्ट ओके कले मैम ओके कहि देबे कोडा कोडा ये करी हला आज देखि ओके देथिबे हेल्थ फैसिलिटी एटी कंप्लीट हला बडी स्टॉप करूची सर कंटिन्यू करिवे आउ मो काली टू आपन को सेफ्टी स्टार्ट करबी सेफ्टी वेलफेयर काली के कंप्लीट करके फैक्ट्री एक्ट काली कवर कर दबा ठीक अछि पिला माने